Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on the socio-economic development, in which we saw that what is meaning by the socio-economic development and how the impact is felt on the economy of each and every country, and that is why it is focus on the socio economic development, right? So society is nothing but the part of country, and if we are compared to each others, there is no lot of difference between the society and country. Those communities are living in the geographical area that is called the country. So community and society is not different part. Okay, so they are integral part of each others, and that is why the socio economic development is most important. When we try to develop the socio economic development, ultimately our country become rich at international level, and the economical status is improved at international level. So it is best thing to discuss here that what is meaning by the socio economic development and how it will be done, and what are the factors are most important in socio economic development, and which kind of the policy we should be decided to develop the socio economical status. So in this way we have been discussed in the last lecture the fourth aspect dimension of socio economic development, and that is why it is called the framework of socio economic development. In the last lecture we try to understand how it works, and we discuss on the policy, how the policy is most important while we are doing the business in any other country. By taking example we try to understand this. And policy is most important to make the development of our economy. So it is depend on the government policy, how it is decided by the government, and if the nation or country is undeveloped, then the policy of that country is responsible for this, and if the country is developing or developed country, so for this also their policy is responsible for this. Their policy is like that, that's why they developed themselves, and the policy is like that, that's why the undeveloped country cannot develop themselves. Okay, so policy play important role to make the socio economic development in our country. So it is better thing that we should be decided good policy, and the expert of each and every field we should include it in the policy making, and when the expert will be included in the
policy making, then the policy will be best, and according that it will help to develop our country. And after that we have also discussed on the business dimension, as well as we saw also that technology dimension, how the technology is most important each and every country of nation. Okay, and with the help of technology, how we can develop our country, how we can make strong our socio-economic condition. So without technology we cannot make a progress, right? So if we are take an example of Japan, England, then China, then Russia, then America, okay. So all these 5 countries or other any other also countries, they are very expert in the technology, they are very prompt in technology, and that's why they develop themselves. Okay, so it is a kind of solution that those country develop the different types of technology in their country, they immediately develop their country. And if we take of undeveloped country like Africa and any other country, so they do not develop technology in their country, and that's why they remain undeveloped in modern age also. So it is depend on the technology, how the nation is, how the progress of nation is going on, we should understand from this. So we always give the importance to the technology, and after that society is most important part for making the development, for making the social development in our country, right? So society is a main part of any other country, and without the contribution of society we cannot make the progress, we cannot develop our nation. So already I have told that society and country is not different parts. Okay, society is integral part of country and country is integral part of society. Okay, the whole community from any country which is which are living in particular geographical area, that is called the country. How we can make the definition? In this way we can make the definition like this. Okay, so society dimension is most important thing here, and without society role we cannot make the development of our country, right? The society dimension include education, human capital, social capital, all these things are included here. There are so many people, those who are living in the society, they are acquiring different kinds of education, and through the education they acquire the different kinds of the skill there. Okay, and the skillful people are the wealth of nation, human resource that is called. Okay, so are the wealth of
एनी नेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सोसाइटी जो एस्पेक्ट है किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उसके बिना हम किसी भी देश की प्रगति नहीं कर सकते। यदि किसी भी देश को अपनी प्रगति करनी है तो उनको सोसाइटी डायमेंशन पर जोर देना होता है, भर देना होता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जिसे बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारे देश में यदि बहुत सारी साधन संपत्ति है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, ओके, बहुत सारी चीज़ें है, खनिज और संपत्ति है, लेकिन उनको यूटिलाइज करने वाला, उनको मैनिपुलेट करने वाला समाज ही वहाँ पर नहीं है, ओके, और उनका एडवांटेज उठाने वाला, सही दिशा में उनका उपयोग करने वाला समाज ही वहाँ पे नहीं एजुकेटेड, तो फिर उस देश में बहुत सारी संपत्ति, वेल्थ होने के बावजूद भी, खनिज और संपत्ति होने के बावजूद भी वह संपत्ति वेन जाती है, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो समाज में जो लोग होते हैं उनको पढ़ना आवश्यक है, उनको एजुकेशनली डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल को एक्वायर करना आवश्यक होता है। और जब वे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल एक्वायर कर लेते हैं तब वो हर एक चीज़ का इफेक्टिवली यूज करते हैं और उसका एडवांटेज भी उठाते हैं। खुद की तो प्रगति करते ही है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन में वे काम करते हैं उस इंस्टीट्यूशन की भी प्रगति करते हैं, और जिस देश में वो रहते हैं और काम करते हैं उस देश की भी वो प्रगति करते हैं। तो इसी तरह सोसाइटी डायमेंशन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। जो देश अपनी सोसाइटी को कम नहीं लेता है, कमज़ोर नहीं समझता है, और हर एक प्रयास अपनी सोसाइटी कैसे मजबूत बन सके इस पर वे फोकस करते हैं, स्पेशली एजुकेशन के द्वारा, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, ओके। तो अल्टीमेटली हमारा देश स्ट्रॉन्ग होता है। ये जिस गवर्नमेंट को समझ में आता है वही देश अपनी प्रगति अच्छी तरह से कर पाता है, ओके। So this definition emphasizes that education is a process that can be conducted in formal and informal setting inside and outside school, universities. Goudet define human capital as knowledge, skill, aptitudes and others acquired traits that contribute to productions or specific work which result in economic value, okay। तो हर एक डेफिनेटर ने इसके डेफिनेशन करने का प्रयास दिया है। तो ह्यूमन कैपिटल जिसे हम बोलते हैं नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड अदर्स एक्वायर्ड ट्रेट्स contributes to production and specific work which result in economic value, okay। तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल इज द स्किल and knowledge base necessary to generate specific output. It creations and maintenance require financial expenditures and time। तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल हर एक देश में है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल जो देश करता है वह देश आगे जाता है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। यदि हम चीन और इंडिया की इकोनॉमी का विचार करें तो चीन की इकोनॉमी हमसे ही स्ट्रांग है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, और सभी चीज़ों में इतने डेवलप है जितना हम नहीं। हम चीन से कई पीछे है बहुत सारी चीज़ों में। मोबाइल वहाँ बनते हैं, चाइना के मोबाइल आपने देखे होंगे, हर एक कोई बंदा उसका यूज़ कर रहा है, लैपटॉप वही के है, ओके। सभी चीज़ें जो मार्केट में होती है वो सभी ऑक्यूपाई चाइना ने किया है। तो दुनिया की, भारत की ही नहीं, हमारे देश की ही नहीं, दुनिया की मार्केट चाइना ने काबिज की है।
इसका एक कारण है वहाँ की जो ह्यूमन कैपिटल है इतनी बड़ी मात्रा में, उसका सही मात्रा में उन्होंने उपयोग किया है, यूटिलाइजेशन किया है। इसलिए वहाँ पे हर एक बंदा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो कुछ न कुछ चीज़ें बनाने का प्रयास करता है और बहुत सारी अलग अलग मॉडल चीज़ें बनाकर, प्रोडक्ट बना के, सर्विस बनाकर वह मार्केट में बेचता है। और वह अपने ही कंट्री में नहीं बेचता तो दूसरे कंट्री में बेचने का प्रयास करता है। तो आप देख रहे हो लैंप वगैरह, क्लॉथ और सभी चीज़ें, बच्चों के खिलौने, स्त्रियों के ऑर्नामेंट्स, पुरुषों के क्लॉथ, सभी चीज़ें जो आप देखते हो मार्केट में, 50 या 60% वो चाइनीज़ मेड होती है, चाइना मेड होती है। तो कहने का मतलब, जब हमारी देश की ह्यूमन कैपिटल का हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा देश डेवलप होता है। ओलंपिक जब होता है तब, अभी ओलंपिक चल रहा है इस साल में, तो वो वहाँ के बच्चे या प्लेयर अगले साल की ओलंपिक की तैयारी करते हैं और वे सीरियसली करते हैं। इतना जो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उतना इन्वॉल्वमेंट और उतना डिवोशन उनका है हर एक चीज़ के प्रति। तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, सही या गलत, ये वही की जनता पर निर्भर होता है और वही की गवर्नमेंट पर निर्भर होता है। आपको सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण पता होगा। जब वे जापान में गए फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने एक कंपनी को विजिट किया, ऐसा कहा जाता है। तो सारे लोग उस कंपनी में काम कर रहे थे और जब उन्होंने उस कंपनी में काम किया तो एक भी आदमी ने उनकी तरफ देखा नहीं। तो पूरी कंपनी फिर के आई। लेकिन कुछ समय के बाद जब वे वहाँ पे रुके थे, तो सारे जो वर्कर थे उस कंपनी में काम करने के लिए, वो उनको मिलने के लिए आए और अच्छी तरह से बात करने लगे। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस की ओर उन्होंने इग्नोर किया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब उनका वर्किंग आवर्स होता है, टाइम्स होता है, तब वे अपना ध्यान अपने काम पर देते हैं, लगन से, मेहनत से काम करते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी भटकते नहीं। और उन्होंने अपने काम के प्रति रिस्पेक्ट दिखाया। तो वहीं से सुभाष चंद्र बोस के ध्यान में आया कि ये लोग अपने काम के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। लेकिन हमारी ओर क्रिकेट मैच शुरू हुआ, कोई सिनेस्टार आ गया, तो हम अपना काम छोड़ के, वो कितना इम्पोर्टेंट, छोड़ के उसे देखने के लिए चले जाते हैं। तो ये अपने काम के प्रति लगाव, ये एज ए कंपेयर हम इंडिया और जापान में कर सकते हैं। तो जापान क्यों आगे है, चाइना क्यों आगे है हमसे, अमेरिका क्यों आगे है, उनका अपने काम के प्रति लगाव, मेहनत, ओके, और जो ह्यूमन कैपिटल है उनका सही तरीके से इस्तेमाल। लेकिन हम अपनी पॉपुलेशन का, ह्यूमन कैपिटल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ओके। इसके लिए एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हमारा एजुकेशन किस तरीके से हम देते हैं और किस तरीके का हमारा एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर ये सारा डिपेंड और निर्भर रहता है। जिस देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होती है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए सूटेबल होती है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए सूटेबल होती है, निश्चित रूप से उस देश की ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग बनती है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक पर चर्चा की। इन दिस इंट्रोडक्शन टू द सोशल इश्यूज ऑन द रोल ऑफ ICT, socio-economic development, we provide conceptual multidimensional framework
that consider four dimensions that impact socio-economic development, policy, business, technology and society. तो इस तरीके से हमने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आईसीटी का रोल तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन जो फ्रेमवर्क होती है यहाँ पर हमने देखी, in which policy, business, technology and society is included. Four dimensions are very important to make this kind of the framework, and if we are follow this framework in our country to develop our country, to develop our human capital, to develop our economy, then it is definitely helpful for us. So in this way this topic has been finished here. Now we are going to take the another topic, the fourth topic from our first unit. So what is the title of fourth topic, fourth concept? Information science, relationship with other subject, information society and knowledge society. Okay. So here information science is the main subject, and how this subject is related to the other subject, and what is meaning by the information society and knowledge society, right? So after understanding socio-economic development, now we are going to study information society and knowledge society. So information science and what is the relation of this subject other subject, it is most important. Okay, so there are many discipline, and each and every discipline have there are many subject, but there is a relation between or among the subject, right? So on which base the relation is there, and how the relation is there in two subject or more than two subject, it is need to study it. Okay, and after that, what is meaning by the information society and what is meaning by the knowledge society, it is known to be understand. Okay, so we are going to discuss one by one here. Human society experience continual and never ending process of development in social, cultural, economic, technological as well as other aspect. Human society experience continual and never ending process of development. Okay. So in this way society development
or society progress is never ending process. It is continuous process. It is going on from or since many years, and it is it will be going many years, right? So the scientific literature analysis and present several periods of its development, right? The scientific literature analysis and present several periods of its development. Recently, the society appears in very dynamic and constantly changing stage in which technologies and information and knowledge play very important and significant role in contemporary society. Now, in modern age, we are looking that society is changing very rapidly. A lot of changes are going on in the society, like in technology, in information science, in other fields. Okay, these changes are most important to develop our society, ultimately to develop our country. If there is no changes in our society, then how we can make the progress, how we can make the development? It is a question in front of us. So changes are necessary to develop our country. Okay. And if we are look this with the help of flowchart, then we will understand that how the subject are related to each others. Discipline. Okay. So how many discipline overall subject in our India? There are four discipline. First one is a arts discipline, that is called the fine arts वगैरह, all subject are included here. And then commerce and management, then science and technology. Okay, so all these four disciplines are given there. And how the subjects are divided into these. Okay, commerce and management, okay, interdisciplinary, then science and technology, okay, and human, okay, arts and fines, all these are discipline. Okay, humanities called.
all these four disciplines are categorized in our education policy, and there are many differences are come under this discipline. In this discipline, commerce and management related subject are come there. All subject interdisciplinary, many subjects are come there, and one of our subject library and information science is come there. Okay, in science and technology, physics, chemistry, bio and other subjects are come under this, and engineering related technology subjects are come there. Humanities, English, okay, politics, history related, like this all subjects are come there. Okay, we have taken only 2 or 3 example here for your understanding how the subject are categorized under the discipline. So if the disciplines are given different name, commerce, management, interdisciplinary, science and technology and humanities, but this categorization is done on the basis of subject nature. How the subject is like that, it is a sociological subject or scientific subject, pure science subject. Okay, so it depend on this, and human related subject all categories come under the humanities, and commerce and business related, management related all subject are come under the commerce and management. Okay, so in this way discipline is most important here, and under which kind of the subjects are come there, all the subjects are also most important, but there is some relation between the each and every subject. What is our point? What is the relation of our information science? What is the relation of LIS to other subject? Okay, so this is most important. Why it is need to be study the relation of our subject to other subject, because from this we will understand the scope of our subject, opportunities of our subject, and utilizations and advantage, usefulness of our subject. Okay, and that is why it is need to be study the relation between one subject or more than one subject. So for your understanding we try to draw these flow charts, from this you will understand. तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे सब्जेक्ट का रिलेशन अदर सब्जेक्ट से होता है, बिकॉज डिसिप्लिन हमें एक बार समझ में आ जाए तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि हमारे सब्जेक्ट का रिलेशन अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे होता है और उसका हमें क्या फ़ायदा होता है, और
हमारे सब्जेक्ट का स्कोप कितना बड़ा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ओके, उसके फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, पास्ट ट्रेंड्स क्या है, प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है, ये सभी बातें हमको यहाँ पर पता चलती है। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि फेसबुक का उदाहरण। जब हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो जिसको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं उनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है ये देखते हैं हम पहले, फिर उसे देखकर उनका पता हमें चलता है कि जिसे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम उस संबंधित व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे सब्जेक्ट का स्कोप कितना है, इम्पोर्टेंस कितना है, यूटिलाइजेशन या यूज कितना है, ओके, और फ्यूचर ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड्स क्या है, प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, स्कोप कितना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सभी सारी बातें समझने के लिए हमें हमारे सब्जेक्ट का रिलेशन अदर सब्जेक्ट के साथ कैसा है इसका स्टडी करना आवश्यक होता है। Consequently, scientific problems appear to study origin of the concept of information and knowledge society as well as to study their affinities and distinction in scientific level, pursuance its clear understanding and uses. Now, the analysis of the concept of information society, knowledge society, affinities and distinction. Okay. Now we are going to watch what is meaning by the information society and knowledge society. Okay. I will rub this. Society. When we talking about the society, then everybody has to know that the word society, but it is also known what is meaning by the society. Society is nothing but the different types of people when live together from different community, and that is called the society. Okay, but in our information science we study what is meaning by the information society and knowledge society. Okay, so there are two aspects of information society and knowledge society. Okay, we always heard about the society where the people are living together and they are express their thought and ideas and exchange others needs and they fulfill or they live their life. This is called the society. We always heard about that. But information society and knowledge society are different types of words for us. Okay, so information society or knowledge society
ये हमारे लिए अलग शब्द है, क्योंकि सोसाइटी के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं और सोसाइटी की जो व्याख्या है, मीनिंग है, वो भी हमें पता है। लेकिन इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होता है, नॉलेज सोसाइटी क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। ओके, तो नॉलेज सोसाइटी, सोसाइटी को ही नॉलेज सोसाइटी कहा जाता है या इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है क्या, उसमें डिफरेंस क्या होता है? और यहाँ पर दो नेम आप सुन रहे हो, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है या सिमिलरिटीज़ होती है, इसका भी स्टडी हमें यहाँ पर करना होता है। ओके, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी, जैसे कि हमने देखा कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता। ओके, तो फिर जब हम नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका मतलब इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक ही बात है, एक ही अवस्था के दो नाम है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। फ़र्क इतना ही है, इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, नॉलेज किसे कहा जाता है। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को नॉलेज कहा जाता है, ऑर्गेनाइज डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग रूप और अवस्था है इनकी, अलग अलग यूज इनके हम कर सकते हैं, अलग अलग फीचर इनके होते हैं, जैसे कि आइस, वाटर और वेपर, अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन यही एक ही पदार्थ की तीन अवस्था हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो फिर हमारे सामने सवाल आता है कि इनमें दो कंसेप्ट में फ़र्क है या नहीं, फ़र्क है तो कौन सा फ़र्क है, कौन से बेस पर वो फ़र्क है, और सिमिलरिटी है तो कैसे सिमिलरिटी है, इस पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो सिमिलरिटी दोनों में कैसी है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, और उसमें डिस्टिंक्शन या डिफरेंस क्या होता है इस पर भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी के बारे में हमें यहाँ पर वन बाय वन चर्चा करनी है, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। जनरली ओवरऑल तो चर्चा हमने अभी शुरुआत में की, अकॉर्डिंग टू आवर ओन इंटरप्रिटेशन बाय ड्राइंग द फ्लो चार्ट। नाउ according to the text we are going to discuss on these points concept. The UNESCO report which was done on 9 November in 2005. Okay, the UNESCO report. What this report tell us? Come a week after the European Parliament for helping adopted EU lifelong learning programs. So in the European Parliament, lifelong learning program designed to inject momentum into European drive toward its goal becoming vibrant knowledge based economy. So the one program or project was developed in 2005, 9 November 2005 in the European Parliament, and this program was on the base of life learning program, that is called the life learning program. तो इस तरीके से यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार 9 नवंबर 2005 में यूरोपियन पार्लियामेंट में
एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया। उस प्रोजेक्ट का जो सब्जेक्ट था लाइफ लर्निंग प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस था, हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज है उसकी इकोनॉमी का एवोल्यूशन करना था, और वो इकोनॉमी किस तरह से वाइब्रेंट हम कर सकते हैं इस पर जोर देने के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। ओके, so there were emphasized the affinities and distinction which can be described as such. Information societies are based on the technology breakthrough that risk providing little more than mass indistinct data for those who don't have the skill benefit from it. तो इस तरह से दोनों में क्या डिफरेंट है या सिमिलरिटीज़ है, हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। Knowledge society is based on knowledge generations, utilization, contribute to the well-being of individuals and communities, encompass social, ethical and political dimension. Okay, तो ये सभी बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई। फर्स्ट आई विल लिस्ट डाउन द फ्यू डेफिनेशन माय स्कॉलर, सी इफ देयर इज फंडामेंटल बेसिस फॉर द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी। A society that organizes itself around knowledge and in the interest of social control and the management of innovation and change. So one definition is given here. The definition is tell us that knowledge in the interest of social control and the management, innovation and change. Okay, where the possible on the basis of information and knowledge, that is called the information society. तो इस तरीके से व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई देश हो, उसकी डेवलपमेंट कब होती है, तो नॉलेज के बेस पे होती है। हमारे पास कितना पैसा है, वेल्थ है, संपत्ति है, इसके बेस पे नहीं होती, क्योंकि हमारे पास नॉलेजेबल ह्यूमन कैपिटल नहीं है। तो हमारे पास वेल्थ, साधन संपत्ति, खनिज संपत्ति, रिसोर्सेज होने के बाद भी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास ह्यूमन कैपिटल तो होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नॉलेजेबल होनी चाहिए। और जिस सोसाइटी में ह्यूमन कैपिटल नॉलेजेबल होती है, वह डिफरेंट टाइप्स का स्किल एक्वायर करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स का स्किल एक्वायर करने के बाद वे अच्छी तरह अपना तो विकास करते ही है, लेकिन जिस संस्था में वो काम करते हैं उसका भी विकास करते हैं, जिस देश में काम करते हैं उसका भी विकास करते हैं, राइट। और फिर वो डिफरेंट टाइप्स के स्किल एक्वायर करते हैं, टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल, और उसके बेस पे वो अच्छा खासा कमाते हैं, उनका आई इनकम बढ़ता है, और जहाँ आई इनकम बढ़ता है अलग अलग प्रोडक्शन उनके द्वारा होती है, तो आई इनकम बढ़ता है, और प्रोडक्शन करने के बाद ग्रॉस इनकम बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। तो इस तरह से दोनों इनकम बढ़ने के बाद देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, तो एक कमाल हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी का यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना इंटरलिंक है एक दूसरे से, हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज नथिंग बट द नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ओके,
General definition, we can make the society like that: the people, those who are living in the society, and they fulfill their needs from to each others. That's why they are living in groups, and groups make the society. जनरल सोसाइटी की व्याख्या हम ऐसे कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, अपनी जो नीड्स होती है एक दूसरे से पूरी करते हैं, और बहुत सारे लोगों को इनसिक्योर फील होता है, इसलिए वे प्रोटेक्शन के लिए, नीड्स फुलफिल करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए ग्रुप्स में रहते हैं, और जब बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं तब सोसाइटी बनती है जनरल सोसाइटी। लेकिन इंफॉर्मेशन या नॉलेज सोसाइटी की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है, या हम अलग कर सकते हैं। जनरल पीपल, those who are living in the society, that is called the common society, normal society, general society. But information society, knowledge society means the people, those who are well informed, well knowledgeable, those who are living in the society, that is called the information society. Okay, so here we can make the definition like this: society. Okay, people, group, okay, that is called the society. जनरल सोसाइटी की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन सोसाइटी तो ये डेफिनेशन हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बना सकते हैं। दोज पीपल knowledgeable, that is called knowledge society. ये हमारे ओन इंटरप्रिटेशन से हम हमारी ये व्याख्या बना सकते हैं, और इसे पढ़ने के बाद हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी या नॉलेज सोसाइटी मतलब क्या होता है, जनरल सोसाइटी क्या होता है। ओके, तो जनरल सोसाइटी यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पूरा टोटल पॉपुलेशन नहीं होता, नॉलेज सोसाइटी पूरा पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन नहीं होता। ओके, यहाँ पर एक उदाहरण हम दे सकते, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा जनरल सोसाइटी क्या होता है और नॉलेज और इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होता है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम 60 बच्चे पकड़कर यहाँ पर चलते हैं। 60 बच्चों में सभी बच्चे टैलेंट होते हैं ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 60 बच्चे में कितना, हम 20% यहाँ पर पकड़ सकते हैं टॉप होते हैं, और 20% मिडिल होते हैं, और लो 20% होते हैं। ओके, ऐसा हम 60 का डिवाइडेशन कर सकते हैं। या 30-30 एंड
40 ऐसा कर सकते हैं। 60% का डिवाइडेशन, टॉप 30%, मिडिल 30% और लो 30%। ओके, लेकिन पूरा क्लास, एक पूरा क्लास होता है, उसमें हर एक प्रकार का बच्चा होता है। सभी कैटेगरी के बच्चे क्लास में हमें मिलते हैं। सम स्टूडेंट्स आर कम टॉप 30%, 30% आर मिडल्स एंड 40% आर लो स्टूडेंट। तो ये उनकी प्रोग्रेस के लेवल पे हम ऐसा डिवाइडेशन यहाँ पर कर सकते हैं। हमें टॉप, मिडल या लो दिखाना यहाँ पर हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये हम उनके टैलेंट पर, उनके नॉलेज के बेस पर ये डिवाइडेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सभी बच्चे टॉप लेवल के हैं ऐसा विधान हम नहीं कर सकते, सभी बच्चे लो लेवल के ऐसा भी विधान हम नहीं कर सकते, और सभी बच्चे मिडिल लेवल के ऐसा भी विधान हम नहीं कर सकते। कुछ बच्चे टॉप लेवल के हैं, कुछ बच्चे मिडिल लेवल के, और कुछ बच्चे लो लेवल के, ऐसा विधान या स्टेटमेंट हम कर सकते हैं, और ये सही भी साबित हो सकता है। ठीक उसी प्रकार सोसाइटी का उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। एक क्लास का उदाहरण हमने यहाँ पर लिया, क्लास स्टूडेंट। ओके, अब सोसाइटी और पीपल का उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। टॉप लेवल के 30% होते हैं, मिडिल लेवल के, जला मिडिल क्लास बोलते हैं, उसमें 30% होते हैं, और लो क्लास के 40% होते हैं। ओके, लो लेवल। तो ये डिवाइडेशन हम दो बेस पर यहाँ पर कर सकते हैं। एक मनी, इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा फिर नॉलेज। ओके, तो ठीक उसी तरह से पूरा सोसाइटी टॉप है ऐसा हम नहीं कह सकते, पूरा सोसाइटी मिडिल है, पूरा सोसाइटी लो है ऐसा हम नहीं कह सकते। सोसाइटी में कुछ लोग टॉप है, कुछ ग्रुप्स या लोग मिडिल है, या कुछ ग्रुप्स या लोग लो है, ऐसा हम कह सकते हैं, और ये विधान सत्य साबित हो सकता है। तो टॉप, मिडिल, लो करके पूरी सोसाइटी आती है, जिसे हम जनरल सोसाइटी बोलते हैं। लेकिन टॉप के जो है 30%, ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी में कैटेगराइज होते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ होल सोसाइटी या जनरल सोसाइटी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी जनरल सोसाइटी से अलग होती है, और स्कोप से जिसे हम पॉपुलेशन से कह सकते हैं कि छोटी होती है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी वो सोसाइटी का ही भाग होती है, जनरल सोसाइटी का, उसमें वे ऐसे लोग रहते हैं। जैसे क्लास में 3 लेवल के बच्चे हैं, टॉप, मिडल और लो लेवल के, लेकिन वे अलग अलग नहीं रहते। टॉप अलग रहते हैं क्लास से, और लो दूसरे क्लास में रहते हैं, और मिडल एक क्लास में रहते। 3 क्लास में वे नहीं रहते, वे एक ही क्लास में रहते हैं। उनके ग्रुप्स बन सकते हैं क्लास में, टॉप का अलग ग्रुप्स, मिडिल का अलग ग्रुप्स और लो का अलग ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स बन सकते हैं, लेकिन वे क्लास में ही बनते, क्लास के बाहर नहीं बन सकते, क्योंकि दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर्स। वो एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, हम एक दूसरे से उन्हें अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन टीचर को होती है, लो लेवल्स के बच्चों से ज़्यादा। जिनका नॉलेज कम है उनके द्वारा टीचर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते। लेकिन बात तो ये होनी चाहिए, जो
लो कैटेगरी के स्टूडेंट है, जिनका नॉलेज पुअर है, तो उनका नॉलेज कैसे बढ़े इस पर टीचर ने भर देना चाहिए, ताकि वो खुद को ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं वे तो ऑलरेडी नॉलेजेबल होते हैं, क्लेवर होते हैं, बेस्ट होते हैं, उनको कोई भी बेस्ट बना सकता है। लेकिन जो नॉलेज से कम है, जिनकी नॉलेज की लेवल लो है, उनका नॉलेज कैसे बढ़ सके, वे कैसे स्मार्ट बन सकते हैं, इस पर हमें भर देना चाहिए एज ए टीचर करके। तो यहाँ पर नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड जनरल सोसाइटी, इसके बारे में हमने डिफरेंस जाना। सो हियर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर दैट so in this way we can understand that information society, knowledge society is not whole population, but it is a part of general society. It is a portion of general society, and that is why it is need to be studied. It can be happen like this: information society, knowledge society, if it is a part of whole society, but the attempt can be done like this: how the information society and knowledge society become whole society. तो ऐसा प्रयास किया जा सकता है, भले ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल सोसाइटी, लेकिन पूरी सोसाइटी, जनरल सोसाइटी हम जिसे कहते हैं, वह नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, या कैसे नॉलेज सोसाइटी बन सकती है, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल में एक क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 30% टॉप लेवल के, 30% मिडिल लेवल के और 40% लो लेवल के हैं। तो हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं, लो लेवल मिडिल लेवल के कैसे बन सकते हैं और लो मिडिल टॉप लेवल के कैसे बन सकते हैं, और सभी बच्चे टॉप कैसे बन सकते हैं। लेकिन सभी बच्चे टॉप तो नहीं बन सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयास किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से संपूर्ण सोसाइटी, जिसे हम जनरल सोसाइटी कहते हैं, जिसमें टॉप मिडल लो नॉलेज के लोग रहते हैं, तो सभी लोग नॉलेजेबल कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और जिस देश की सोसाइटी जितनी नॉलेजेबल हो, इंफॉर्मेटिव हो, उतना ही वह देश स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही वह देश डेवलप बनता है। तो हर एक देश को हमारी सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी कैसे बन सकती है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी कैसे बन सकती है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो देश हमारे सोसाइटी को नॉलेज सोसाइटी में बनाने के प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वे देश निश्चित रूप से प्रगति करते हैं। तो इस तरह से फ्लो चार्ट से आपको समझ में आएगा सोसाइटी यानी क्या, जनरल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, नॉलेज सोसाइटी का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, जनरल सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी या नॉलेज सोसाइटी एक दूसरे से डिफरेंस कैसे होती है और सिमिलरिटी क्या है, इसको हमने अलग अलग उदाहरण के द्वारा या स्तर पर समझने का प्रयास किया। और डेफिनेशन के तौर पे भी एक डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी, और बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्यों दी जाती है, हमें तो पेपर में डेफिनेशन लिखने को नहीं कहा जाता, लेकिन डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन के तौर पर इसने डेफिनेशन लिखी, इसने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन दी जाती है और 4 डेफिनेटर के नाम नीचे दिए जाते हैं, और ऊपर दी गई जो डेफिनेशन है किसने बनाई, ऐसा सवाल हमें पूछा जा सकता है।
तो इसके लिए हर एक डेफिनेशन को, और जिसने वो डेफिनेशन बनाई है वह आप ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि पेपर में आप लिख सके। Society where information is used an economic resource, the community harness, exploits it, and behind it all industry develops which produce the necessary information. तो इस तरह से निक मूरे 1970 में एक डेफिनेशन दी, और इसमें इकोनॉमिक रिसोर्स और कम्युनिटी हार्नेस एक्सप्लॉइट का मतलब समझाया गया, ताकि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, कम्युनिटी एक्सप्लॉइट है, इंडस्ट्री डेवलप है, ये सभी चीज़ें जब हम सोसाइटी में करते हैं तो निश्चित रूप से नॉलेज सोसाइटी का जन्म होता है। और भी बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पर दी है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हम अलग अलग डेफिनेशन से कर सकते हैं। ओके, लेकिन मीनिंग समझने के लिए 2 or more than 2 definition are most important for us. So you can read more definition from other sources, whether it is online or offline. The expression post-industrial society was first coined in 1914 in Great Britain by Ananda K. Kumar Swamy and Arthur G. Penty. तो इस तरीके से इन 1914 पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज फर्स्ट कॉइन आउट इन ग्रेट ब्रिटेन बाय आनंदा के कुमार स्वामी एंड ऑर्थर जे पेंटी. So you should remember these two names. On which concept first invented regarding this information society? First coin. Okay, Great Britain by Ananda K and Kumar Swamy, Arthur J. Penty. Okay, so you can note down these points. It will be asked in the examination. It was later reviewed from 1950. तो 1950 में ये रिव्यू की गई फिर से. यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. दिस कंसेप्ट coined in 1940 in Great Britain country. Okay, by Ananda K, Kumar Swamy and Arthur J. Penty. Okay, so this is the first term or first concept. Then in 1958 in America by Daniel Bell. From the end of the 1960, the French social science by Alain Turin. Okay, और फिर इसका रिवीजन किसने किया? 1958 में अमेरिका में. नाम दिया डैनियल बेल एंड ओके, इसका रिव्यू किया. और फिर 1968 में 60 में फ्रेंच सोशल साइंस एलन टूरिन, इन्होंने इसका जस्टिफिकेशन दिया. तो इस तरह से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में 3 नाम, 3 ईयर्स, 3 कंट्री यहाँ पर दी गई है. किसने कब इस कंसेप्ट को रिव्यू किया, उसके ईयर्स, कंट्री और उनके नाम यहाँ पर दिए हैं. सो यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. आप ये लिख सकते हैं ताकि
इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में कोई भी सवाल आपको पूछा जाएगा तो उसका जवाब आपको यहाँ पर आना चाहिए. ओके, सो यू कैन राइट डाउन. Japanese version of the expressions Joho Shakai was born during the conversation in 1960 between Kisho Kurokawa, the famous architect, and Tadao Umesawa, the renowned historian and anthropologist. In regard the technology which forms the basis of production, term automation, later cybernation, introduced by the automotive engineers of the Ford company D.S. Harder in 1946, facilitated discussion for decade. So in this way, automation, this concept is later on find out by the automation and cybernation by the automotive engineers S. Harder, D.S. Harder, Ford company in 1946. Okay, so this also remember because this is similar to the information society. Then Webster 6 approach what tell us. So this development is also done in the regarding information society, and that is why it is given for study us. Okay, so you should remember all these things, which kind of the concept come first, and later on what kind of the concept is come, and what name is given, and who invented it. Okay, so Webster 6 approaches what tell us we are going to discuss now. Society into broad groups, each groups representing a unique perspective. In this connection, it is worth noting that Webster distinguished express present 6 different perceptions of the information society on the basis of technology, economy, occupational, spatial, cultural criteria. Okay, so how many points are given there, we should know about that, and how many elements are given there, we should also discuss about that. Okay, so technology is most important approach which is given in the part. And how the technology play important role. The most common definition is highlight to an increase in information and communication technology as signaling the emergence of information society. It is suggested often implicitly that ICT both define and create the information society. Technological measures appear robust, but on examination they are vague. Photocopies to PCs, internet to video games, and digitizations in generals. Okay, so here
points is given that technology most important. And how the technology play important role. Increase or to develop the information society. When we talking about the technology, at that time the best example is come in front of us, that ICT, information communication technology, that is called. And while we are using the ICT each and every place, then it is help to produce n numbers of data, lot of data, and exploitation of data is occurred everywhere. It is very difficult to manage the data as well as information. तो इस तरीके से ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां हम आईसीटी का यूज़ नहीं करते हैं. हर जगह पे हर व्यक्ति अभी आईसीटी का यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है. हर एक के पास मोबाइल, हर एक के पास कंप्यूटर है, हर एक के पास टैब है. ओके, तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न हो रहा है और एक तरीके से डेटा एक्सप्लॉइशन जिसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉइशन, इंफॉर्मेशन का स्पोर्ट हुआ है. और जब इंफॉर्मेशन का स्पोर्ट हुआ यानी कि क्या, बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन का जनरेशन होना, क्रिएट होना, तो यह भले ही एक प्रकार की समस्या है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. जैसे कि सागर को हम घाघर में भर नहीं सकते, सागर को मैनेज नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशन ह्यूमन बीइंग पर आती है. ठीक उसी तरह से सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन हर एक क्षण को बाहर आ रही है, तो उस सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम मैनेज नहीं कर सकते. लेकिन इसका एक अच्छा पॉजिटिव जो उपयोग है, एडवांटेज है, वह इंफॉर्मेशन सोसाइटी डेवलप करने के लिए हो रहा है. क्योंकि इंफॉर्मेशन इज़ नथिंग बट द नॉलेज, एंड ऑन द बेस ऑफ नॉलेज each and every person can develop himself as well as where he was working in the institution, he can develop also institutions as well as country. तो इस तरीके से इंसान जिस संस्था में काम कर रहा है, उस संस्था को डेवलप करता है, खुद को भी डेवलप करता है और देश को भी डेवलप कर सकता है. So technology play important role to make the information society strong. Then economic, this suggests that the information society is one of in which contribution of information business and trades, publishing, entertainment and consultancies has expanded over time to now outweigh manufacturers and agriculture in terms of contributions to gross national product. Generally, such analysts adopt the terms information economy to describe situation in which information industry command and major proportions of GNP. Okay, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जहाँ पर डेवलप हम करते हैं, where we can develop the technology, there a lot of information is spread. And what is the second step, how we can manage all kinds of the information it is need, and by using and by manage all kinds of the information, how we can develop our economical status in our country, and with the help of this knowledge we can make our economy strong. Okay, तो economy strong कैसे बनती है, information related industry we can open, and in our society information behave as a commodity as well as product, and we can sell it, we can purchase it. Okay, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन हम खरीद और बेच सकते हैं, और इंफॉर्मेशन को एक तरीके से हम इकोनॉमिकल दर्जा दे सकते हैं, इकोनॉमिकल कमोडिटी करके उससे बिहेव कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट.
तो इसका परिणाम हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने में होता है। तो इकोनॉमी ये फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है 6 अप्रोचेस में वेबस्टर ने जो दिए हैं हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जहाँ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है, जहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है वहाँ पे अच्छे ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स जनरेट होता है और वे अपना अलग अलग स्किल डेवलप करके खुद की तो प्रगति करते हैं, अपने देश की भी प्रगति करते हैं, जिस संस्था में वो काम करते हैं उस संस्था की भी प्रगति करते हैं। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर 6 approaches, 2 approaches we have been discussed here, technology and economy, and how they play important role